Welcome, friends. Welcome to this briefing on updates on the West Asia developments. Today, we are joined by Textile Ministries. We have with us Mr. Bipin Menon, trade expert. He will brief us on the initiatives and updates from the Textile Ministry. Over to you, Bipin. Thank you, ma'am, and good afternoon to you all. On behalf of the Textiles Ministry, we have been monitoring these developments regularly in West Asia. And on account of this, we have conducted a lot of stakeholder consultations, both on the textile side as well as handicraft. And in response to that, we have a monitoring cell also, which is monitoring these developments and also talking to a lot of stakeholders. Primarily, we are talking to the export promotion councils, the regional cluster associations, a lot of domestic associations. We're also in touch with DG shipping authorities, the Ministry of Petroleum and Natural Gas, including GAIL. And we've also carried out a lot of outreach programs on these resilience and logistics intervention for export facilitation of the Department of Commerce. The EPCs have carried out the independent consultations. For example, the Carpet Export Promotion Council on 6th of April and the Export Promotion Council for Handicraft on the 20th of April, where they discussed a lot of issues with their stakeholders, including shipping disruptions, alternative routing, logistics planning, and cost optimization. The advisories that the DG Shipping is issuing, we are circulating them also to our stakeholders, and also, discussing with them to look at alternate ports such as Jeddah, for example, to supply to the Middle East. So these developments are coming as and when the situation is evolving. On ensuring fuel and natural gas to the industry, we've been in touch with the petroleum and natural gas. We've been in touch with some of our stakeholders. And what we believe is that they have placed us under the priority list 3 and 4, with supplies being maintained at 80% of the past 6 months average consumption. We're also looking at, in case there's any particular shortfall, the monitoring cell would also be looking at interfacing with GAIL to look at for them to purchase gas in the spot market. On the customs duty side, there's been a lot of discussions in terms of reduction on customs duty on a lot of inputs and intermediates for the textile sector. We discussed with the Department of Revenue, and as you're aware, on 1st of April, they had taken out a notification 12/2026, wherein they had reduced customs duties on a number of products. Around 29 inputs of the MMF sector pertaining to textiles were part of it. Some products like monoethylene glycol and PTA. Apart from that, we're also further taken up some other inputs that are not part of this notification, which includes caprolactam and nylon chips. We've also been pressing for the rayon elimination of duty on rayon grade wood pulp, which is an input for the viscose segment, and also inputs for the glassware manufacture, where I think there are a lot of inorganic chemicals which are inputs for that. We've also slightly related issues about the anti-dumping duty on certain inputs. So we have looked at the removal and deferment of anti-dumping duties on some inputs such as elastomeric filament yarn and viscose rayon filament. Many of our offices, for example, the Office of the Textiles Commissioner in Mumbai has been in touch with a number of state governments and the cluster associations, and they have really disseminated some of the best practices some of the districts have been undertaking in terms of dealing with this issue. Some of these are the district level committees which have been formed under the chairmanship of the district collectors for reviewing their LPG distribution. MSME units being encouraged to shift to piped natural gas. Opening of community kitchens for blue collar workers in some states. And use of alternate fuel like torrefied biomass from cotton stalk instead of coal. We've also written to the office, the Department of Commerce on the export remission schemes. There were some suggestions on the RODTAP and the ROSTIL listing. So we've just taken it up with the Office of the DGFT. Some of the suggestions include the increase of rates, the restoration of rates in a period where the RODTAP rates were cut down to 50%. And these have been examined by the appropriate authorities. On the foreign trade policy, the other aspects of the foreign trade policy, we have been looked at interest subvention, some inputs on the EPCG scheme, some inputs on the advance authorization. All these are measures to facilitate exporters during the West Asia crisis. So thank you very much.
Thank you, Vipin ji. Over to you, Sujata, for Petroleum Ministry updates. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे यहाँ पर भी क्रूड और एलपीजी और पीएनजी के इंपोर्ट पर प्रभाव पड़ा है, परंतु भारत सरकार की यह चेष्टा रही है कि जो घरेलू हमारे उपभोक्ता हैं उनको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए और डोमेस्टिक पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है। इसके अलावा कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर कर दी गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी पर दी जा रही है। इसके अलावा फार्मा, स्टील, सीड, एग्रीकल्चर इत्यादि सेक्टर्स को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। और माइग्रेंट लेबर के लिए भी 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर्स की सप्लाई लगभग डबल की जा चुकी है। इस सब के चलते हमारे एलपीजी सप्लाई नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की अगर हम सेल देखें तो अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,75,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है और कल लगभग 9,578 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई। ऑटो एलपीजी अभी अप्रैल के महीने में लगभग 9,500 टन की सेल हुई और अगर हम ऑटो एलपीजी की सेल का आंकड़ा फरवरी के महीने में देखें तो ये लगभग 5,000 टन थी। तो अगर आप इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एलपीजी की सेल पीएसयूज में लगभग दोगुनी हो गई है। इसके चलते जो प्रतिदिन हमारा एवरेज है अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे है और यही एवरेज जनवरी और फरवरी के महीने में लगभग 177 टन पर डे था। स्टेट्स लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में ग्रोथ काफ़ी अधिक देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर के संबंध में मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि फरवरी 26 में हमने लगभग 21 लाख ओएमसीज ने लगभग 21.7 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल की थी और अगर अप्रैल के महीने में अब तक ये सेल देखें तो लगभग 20.32 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। कल लगभग 82,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई और ओएमसीज के द्वारा स्पेशल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अभी तक 3 अप्रैल से लगभग 9,350 अवेयरनेस कैंप किए गए हैं और इन कैंप्स में भी 1,53,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की है। कल भी लगभग 220 कैंप लगाए गए और इसमें 5,436 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेस्टिक को तो प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को भी 95% तक पीएनजी की सप्लाई रेस्टोर एलोकेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग सीजीडी नेटवर्क, वहाँ पर भी गैस की सप्लाई को लगभग 80% तक इंक्रीज किया गया है। सीजीडी एंटिटीज़ को भी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा इत्यादि को 100% गैस सप्लाई रेस्टोर करने के लिए देने के लिए कहा गया है। लगभग 22 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन हो रहा है क्योंकि उन्होंने पीएनजी कनेक्शन को एक्सपैंड करने के लिए कई सारे कदम लिए हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5,60,000 पीएनजी कनेक्शन गैसीफाई किए गए हैं। 2,64,000 एडिशनल कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और 6,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा 42,800 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। रिटेल आउटलेट्स पर सब रिटेल आउटलेट्स भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, परंतु कुछ स्थान से हमको पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
हम इन सभी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट में है और सभी आरओज को मॉनिटर किया जा रहा है और सप्लाईज आरओज पर प्रायोरिटाइज भी की जा रही हैं ताकि स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे और कहीं पर और हर जगह पर ड्राई आउट को अवॉइड किया जा सके। मैं आपको ये भी आपके द्वारा सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि पैनिक बाइंग से बचें और ऑफिशियल जो सोर्स है करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर रिलाई करें। क्रूड और रिफाइनरीज के संबंध में हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंट्रीज हैं और सब रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा एलपीजी पूल से जैसा आप जानते हैं 1000 टन पर डे C3C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा, पेंट और केमिकल सेक्टर कंपनीज के लिए भी प्रोविजन किया गया है। इसके चलते 9 अप्रैल से अब तक लगभग 8300 टन प्रोपिलीन और 870 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरीज से केमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री को की गई है। एनफोर्समेंट में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है, इसीलिए राज्य सरकारों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो डेली प्रेस ब्रीफिंग करें ताकि एक सही इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंच पाए। इसके अलावा एनफोर्समेंट एक्शन को कंटिन्यू रखें और जो एलपीजी सप्लाई है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे 5 किलो का सिलेंडर है, उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें ताकि सप्लाईज इंश्योर्ड हों। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम स्थापित हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज का गठन हो चुका है और कई स्टेट्स द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग भी दी जा रही है। एनफोर्समेंट एक्शन के अंतर्गत कल लगभग 2800 जगह पर रेड्स और इंस्पेक्शन हुई। मार्च से लेकर अब तक लगभग 67,000 सिलेंडर सीज हुए हैं, 1160 FIRs हुई हैं और 271 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं। OMCs के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कंटिन्यू है और अब तक लगभग 316 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई हैं। 72 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया जा चुका है। कल भी लगभग 46 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की गई और 46 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस इशू किया, क्षमा करें, और पेनल्टी 6 पर लगाई गई। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास LPG, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त सप्लाई है। प्राइस स्टेबल है, प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। अतः पैनिक बाइंग से बचें और अपनी आवश्यकता के अनुसार LPG, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Before we move on, I would like to correct myself. Mr. Bipin Menon is Trade Advisor from the Textile Ministry. Thank you. Over to Shipping Ministry. Thank you, ma'am. Good afternoon. The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel has been reported in past 24 hours. DG Shipping Control Room has handled 7,920 calls and more than 16,800 emails. In past 24 hours, 140 calls and 180 emails have been received. The ministry has facilitated the safe repatriation of more than 2,800 Indian seafarers so far, including 24 in last 24 hours. Port operations across India remains normal with no congestion reported. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Senthil, you would like that? Okay, now we open to questions. 161, 194, 287, 207, 54, 208, 237. Hi, sir. I'm Rajesh Roy from Bloomberg. Question is for Mr. Menon. You mentioned in your statement something related to eliminating customs duty on rayon wood pulp. Can you just clarify what that is? Are you seeking reduction or elimination?
I have a question for Sujata ma'am. The Naira refinery has been under a maintenance shutdown. When is that shutdown likely to end? And any other refiners that are heading for a maintenance shutdown in May and June? Thank you. Thank you. Amar Zadi from PK. Question for Sujata ma'am. The elections in West Bengal will end tomorrow. Will there be a revision in prices for petrol and diesel day after tomorrow? Till now, you have been maintaining that the prices have not been increased. Will that be the situation even on 30th of April as well? Thank you. Sukal from the Indian Express. First question is for Sujata ma'am. Ma'am, this is regarding the ATF prices. Now we are again approaching the 1st of May. Would the staggered increase, the practice of only passing a part of the increase for domestic flights continue, or how is the pricing going to be? Because airlines seem to be quite concerned about the hike in international ATF prices. The other question is for Mukesh sir. So while we've seen that over the past 10-11 days, there hasn't been any movement of an India flagged vessel from the Persian Gulf to the east of the Strait of Hormuz, but vessel tracking data indicates that there have been a few handful of container ships bound for India, foreign flag, but bound for India, that seem to have crossed. Could you give us some sense, what is the number like, what kind of cargoes are they carrying, and what ports are they approaching? Thank you. मैम मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से मेरा एक सवाल सुजाता मैम आपसे है कि लॉन्ग टर्म में तो हम लोग अल्टरनेट फ्यूल पे सरकार की रणनीति है, शॉर्ट टर्म में आप अभी कुछ मेजर ले रही हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल जल्द खुलने का आसार नहीं दिख रहे हैं, तो मीडियम टर्म अप्रोच क्या रहेगा कि हम लोग अल्टरनेट सोर्स से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे रास्ते से उतना क्रूड गैस ला पाएंगे जितना ज़रूरत हम लोगों के लिए है मीडियम टर्म में? और एक सवाल विपिन मेनन सर आपसे है कि टेक्सटाइल सेक्टर के इसके अलावा जो मेटल इनपुट ड्यूटी हटाने की बात आपने की, इसके अलावा जैसे कॉटन के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसको भी हटाने की बातचीत, उस पर रिडक्शन ड्यूटी हटाने की बात चल रही, क्या ये भी अंडर कंसिडरेशन है क्या? Hi, this is Rishi from the Business Line. I have a question for the Oil Ministry. Ms. Sharma, ma'am, on March 26, the government had said that they have fixed around 8 lakh tons of LPG to be imported from USA, Russia, and a couple of other countries. What is the situation as of now, ma'am? How much consignment has come, and has the government made any more fresh allocations for procuring LPG? Ma'am, this is Atul Mathur from the Times of India. It's been exactly 2 months now since the war broke out in West Asia. How comfortable India is now in terms of the availability of gas and crude? Where exactly are we procuring gas and crude now to plug the supply gaps because of the West Asia thing? And secondly, you have been giving us numbers of PNG connections activated and new registrations. Now, how many of them exactly are old connections which were not gasified but activated, and how many new connections are actually activated? If you could give us a breakdown, please. Thank you. We start with you, Sujata. So first one was about refinery shutdown and turnaround. So Naira is expected to come next month, somewhere around mid-May. And other refineries, I don't have the data, but it's a routine process where the refineries go under shutdowns and for repair and maintenance. Petrol price after April 1st, I must say that there is no proposal for increase of the prices. ATF prices, again, you know that there has been a staggered increase, and whenever the decision is taken, we will inform you about that also. Next three questions were more on the import of crude, LPG, and the midterm efforts, etc. So regarding that, I have said it a couple of times, and I'm saying it now also, that now today is 28th, so it's almost 30 days, 60 days since this crisis is on. But we have managed all the supplies, whether it is crude, LPG, or PNG.
and we are very confident that we will be maintaining those supplies, and we are purchasing from wherever the product is available. And regarding the PNG connections, the new one and the old one gasified, around 3,99,000, more than 3,99,000 are the old connections which have been gasified, and 1,61,234 are the new connections given and then gasified. Thank you. Bipinji. Thank you. So for the first one is the rayon grade wood pulp. This is basically, there's a 2.5% duty here and we are seeking elimination of it. This is an input for the viscose chain. But again, the linkages directly to the Middle East crisis is not very, it's not a very clear-cut case of a direct linkage to the Middle East crisis. So we are working with the Department of Revenue to see whether the reduction can happen. दूसरा प्रश्न जो कपास के ऊपर था, ये हमें तीनों मिनिस्ट्रीज को एक साथ बैठ के हम लोग इस पे देख रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन या एलिमिनेशन का, या ये भी मतलब इस पे भी चर्चा हो रही है कि अगर हम लोग इसको टेम्पररी कर सकते हैं जो लीन सीजन है, बट इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम लोग और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तीनों मिलके एक साथ परामर्श करके एक डिसीजन लेंगे. थैंक यू. Thank you, ma'am. As we know that the last Indian flagged vessel passed through Strait of Hormuz on 18th. And yes, there have been some vessels which are transiting through Strait of Hormuz, but number has been really low. Like before this war erupted, it was around 138, and it's in the range of say 6, 7 or something like that. As regard to your specific question about the details of the container vessel which are passing through, none of the Indian flagged vessel has passed. And as regard to foreign vessels carrying containers, it's a commercial information, and really we do not have information and we cannot disclose information. No, that is not the answer. I'm not saying that some of the past have come to India, not like that. But it's a very, very typical situation. It's a different matter how many have passed, but then how many have gone to port, that is another thing. It does not mean that when I say few vessels have passed through Strait of Hormuz, that means those vessels have reached to the port. You know very well that. And so we do not have any information that any vessel, any container vessel which has passed through Strait of Hormuz and it has come to Indian port. That is what I mean to say. Thank you. Thank you. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all.